Namaste to all. Myself JVWU Dr. Suman Shekhawat, Department of Fire Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, JAYOTI VIDYAPEETH, Province University, Jaipur. Today we will be discussing about COPD. In previous session we have discussed about management of bronchitis. This is the introduction of COPD. COPD, chronic obstructive pulmonary disease, is defined as a preventable and treatable disease characterized by persistent airflow limitation that is usually progressive and associated with an enhanced chronic inflammatory response in the airways and the lung to irritant or noxious particles or gases. Related diagnoses include chronic bronchitis, cough, or sputum for at least 3 consecutive months in each of 2 consecutive years, and emphysema, abnormal permanent enlargement of the air spaces distal to the terminal bronchioles, accompanied by destruction of their wall and without obvious fibrosis. इससे पहले वाला जो सेशन था वहाँ हमने ब्रोंकाइटिस डिस्कस किया था। वहाँ हमने देखा था कि अक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है उसी के लेटर स्टेज के अंदर इस तरह सीओपीडी की प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है ज्यादातर। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा एबनॉर्मल परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेसेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल। Risk factors for the development of chronic obstructive pulmonary disease. Environmental factor, tobacco smoke account for 95% of cases. In previous session, we have seen that smoke is a important causative factor for chronic bronchitis. एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के स्मोकर्स होते हैं। स्मोकिंग जो है वो अगर एक्टिवली जो पर्सन स्मोक करता है उसको 10% हार्म करता है, तो उसके आसपास में जो लोग उसके एक्सपोजर में रहते हैं उनको लगभग 90% हार्म करता है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट जहाँ पे जो है स्मोकर्स हैं उनमें, और एक लॉन्ग टर्म तक इस तरह के एरियाज जहाँ पे धुआं जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो एयर पोल्यूशन के एक्सपोजर में भी अगर लॉन्ग टर्म तक पेशेंट रहता है तो ऐसी कंडीशन में इस तरह के डिजीज का प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे टोबैको स्मोक 95% केसेस के अंदर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। इंडोर एयर पोल्यूशन जिसमें कुकिंग विद बायोमास फ्यूल इन confined areas in developing countries, occupational exposure such as coal dust, silica and cadmium. Low birth weight may reduce maximally attained lung function in young adults life. जनरली जो इस तरीके का होता है कि ड्यू आफ्टर जो एक होता है ना कि बर्थ वेट अगर किसी का कम है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो कंपैरेटिवली पेशेंट का वीक देखने को मिलता है। लंग फंक्शनिंग जो होती है वो पेशेंट की कंपैरेटिवली जो होती है वो पुअर होती है। इस कंडीशन में भी ये वाली जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में भी ये हमारा जो होता है ना एयर फ्लोज के लिए जो और हमारे पूरे बॉडी के जो सेल्स हैं इनको ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर वो ही जो है उतना सक्षम नहीं है तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होता है वो पेशेंट का 100% नहीं जाता, वो डाउन होता है, पेशेंट हाइपोक्सिया के अंदर जाता है। ऐसी कंडीशन, इसके अलावा लंग्स की ग्रोथ, अगर किसी पेशेंट को लंग्स की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं है, अगर पेशेंट को रिकरेंट चाइल्डहुड इन्फेक्शंस रहते हैं कि बार बार पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है, या मदर स्मोकिंग करती है, मे अफेक्ट ग्रोथ ऑफ लंग
ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ऐसी कंडीशन के अंदर जो होता है लंग्स का ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, रिजल्टिंग इन लोअर मैक्सिमल अटेन लंग फंक्शन इन एडल्ट लाइफ। इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन में एक्सलरेट डिक्लाइन इन जो फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड जो है FEV1, वो पेशेंट का डिक्लाइन करता है। परसिस्टेंस ऑफ एडिनोवायरस इन लंग टिश्यू में ऑल्टर लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रीडिस्पोजिंग टू लंग डैमेज। HIV infection is associated with emphysema, low socio-economic status, and cannabis smoking. These are the environmental factors we have discussed. Host factors are genetic factors, alpha 1 antitrypsin deficiency, and other chronic obstructive pulmonary disease susceptibility. Genes are likely to be identified. एयरवेज हाइपर रिएक्टिविटी, जो इस तरह की हमने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी देखा था कि कुछ जो है लोगों के लिए अलग 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 लोगों में अलग अलग तरह के जो है ना एलर्जेंस हो सकते हैं। कुछ लोग जो होते जो होता है ना एक हाइपर रिएक्टिविटी इरिटेंट्स के साथ में जो होता है ना एक रिएक्टिविटी रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर बार बार शो कर रहा है या इरिटेंट के एक्सपोजर में बार बार आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो हमारी गॉबलेट सेल्स हैं उनके अंदर हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। हाइपरप्लेजिया की वजह से एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन आता है। एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयर फ्लो रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, और ये सब चीज़ें जो होता है लॉन्ग टर्म के अंदर सिस्टम को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एयरवेज हाइपर रिएक्टिविटी, cigarette smoking represent the most significant risk factor for COPD, and the risk of developing the condition relates to both the amount and duration of smoking. इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है कितना मात्रा में स्मोकिंग करी जाती है उसका भी इम्पोर्टेंस है, और कितने समय तक करी जाती है इसका भी इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे जो एक स्मोकिंग है वो एक्टिवली और पैसिवली दोनों ही तरीके से हार्म करती है। यूजुअली अगर हम देखें तो it is unusual to develop COPD with less than 10 packs 1 year। अगर जो है लगभग 1 pack is equal to 20 सिगरेट पर डे पर ईयर, अगर 1 साल के अंदर 10 पैकेट सिगरेट के लिए जा रहे हैं तो वो उतना COPD के लिए जो होता है ना की तरफ नहीं जाता है, पेशेंट इतना हार्म नहीं करता है। Not all smokers develop the condition, suggesting that individual susceptibility factors are more important। इसमें इंडिविजुअल जो है उस अपना अपना कौन कितना ससेप्टिबल है इस चीज के लिए भी, इस चीज की भी उतनी इम्पोर्टेंस है। अगर हम यहाँ पे डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी की तरफ जाएं तो COPD हैज बोथ पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक कंपोनेंट। If we are talking about pulmonary components, then loss of elastic tissues, inflammation, and fibrosis in airways wall result in premature airways closure, gas trapping, and dynamic hyperinflation, leading to changes in pulmonary and chest wall compliance, enlargement of mucus-secreting gland, and increase in number of goblet cells, accompanied by an inflammatory cell infiltrate, result in increased sputum production and leading to chronic bronchitis। ये सब पैथोफिजियोलॉजी हम इससे प्रीवियस जो हमारा सेशन था क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, आप उसमें भी इसको सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी तरह की क्वेरी है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। Unopposed action of protease and oxidant leading to the destruction of alveoli and appearance of emphysema. The work of breathing is therefore markedly increased, first on exercise, when the time of expiration is further shortened. But then as the disease advance at rest, if we are talking about the systemic components, then muscular weakness reflecting deconditioning of
deconditioning and cellular changes in skeletal muscle, increase circulating inflammatory markers, impaired salt and water excretion leading to peripheral edema, altered fat metabolism contributing to weight loss, and increased prevalence of osteoporosis. Clinical features of COPD. COPD should be suspected in any patient over the age of 40 years who represent with symptoms of chronic bronchitis and breathlessness. Depending on the presentation, important differential diagnosis include chronic asthma, tuberculosis, bronchiectasis, and congestive cardiac failure. Cough and associated sputum production are usually the first symptom and are often referred to as a smoker's cough. Hemoptysis. Hemoptysis is blood with sputum may complicate exacerbation of COPD but should not be attributed to COPD without thorough investigation. Breathlessness usually prompt presentation to a health professional. The level should be quantified on the basis of scale such as Modified Medical Research Council MRC. Dyspnea scale may be useful. This is dyspnea scale. You can see in this slide. Grade 0 to grade 4. Grade 0, no breathlessness except with strenuous exercise. Grade 1 is breathlessness with during hurry on the level or walking up a slight hill. Grade 2 is walk slower than contemporaries on level ground because of breathlessness or have to stop to breathe when walking at own pace. Grade 3 is stops for breath after walking about 100 meters or after a few minutes on level ground. Grade 4 to breathless to leave the house or breathless when dressing or undressing. These are the ग्रेडिंग्स फॉर डिस्निया कि पेशेंट को एक तो होता है कि हैवी एक्सरसाइज में ही सिर्फ जो है ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही हो, एक है कि पेशेंट को जो है थोड़ा सा ऊपर चढ़ने में पेशेंट की सांस फूलने लग जाती हो, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती हो, एक जो है पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है इसलिए वो उतना स्पीडली चल नहीं पाता या कंपैरेटिवली जो है नॉर्मल सर्फेस पे भी स्लो चलता है, ठीक है, या पेशेंट को रुकना पड़ता है सांस लेने के लिए। ग्रेड 3 के अंदर 100 मीटर पे ही पेशेंट को लगभग एक प्लेन सरफेस पे भी सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। ग्रेड 4 में पेशेंट को ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग के अंदर भी अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो डिस्निया का ग्रेड 4 है। इन एडवांस डिजीज इंक्वायरी शुड बी मेड एज टू द प्रेजेंस ऑफ एडिमा which may be seen for the first time during an examination and morning headache, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट को अगर पल्मोनरी एडिमा की प्रेजेंटेशन है तो ऐसी ऐसी कंडीशन के अंदर एडवांस जो होता है ना डिजीज कंडीशन में पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा का प्रेजेंटेशन मिल सकता है। इसके अलावा मॉर्निंग हेडेक पेशेंट को देखने को मिल सकता है। और हमने देखा था कि अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का केस है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को दो कंडीशंस जो है वो डेवलप हो रही थी, हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया, जिसका कारण था रेजिस्टेंस इन एयर फ्लो, ठीक है, कि पेशेंट के जो एयरवेज थे उनमें नर्विंग हो रही थी, पेशेंट के एयरवेज जो थे वहाँ इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा थी कि पेशेंट को एयर एक्सचेंज के अंदर एयर फ्लो के अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से पेशेंट को जो था ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पा रहा था और ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो जा नहीं पा रही थी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इस वजह से पेशेंट को हाइपोक्सिया देखने को मिल रहा था और दूसरी स्थिति जो थी CO2 बाहर नहीं आ पाने की वजह से पेशेंट को हाइपरकैप्निया की स्थिति मिल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो पेशेंट को बढ़ रहा था। तो मॉर्निंग हेडेक अगर किसी को हाइपरकैप्निया है तो ऐसी कंडीशन में EBG करा के आर्टेरियल ब्लड ग्लूकोज आर्टेरियल ब्लड गैसेस जो है EBG वो पेशेंट को करा के देखना चाहिए। मॉर्निंग हेडेक की प्रेजेंटेशन यहाँ देखने को मिलती है।
अगर हम यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक फिजिकल साइंस की तरफ जाएं तो किस तरह के साइन प्रेजेंट होंगे पेशेंट को कि breath sound are typically quiet. Crackles may accompany infection, but if persistent, may be possibility of bronchiectasis. Finger clubbing is not a feature of COPD and should trigger further investigation for lung cancer or fibrosis. Right heart failure may develop in patients with advanced COPD, particularly if there is coexisting sleep apnea or thromboembolic disease. You can say it core pulmonary. C- COPD patients often have pitting edema from salt and water retention caused by renal hypoxia and hypercapnia, fatigue, anorexia, and weight loss may point to the development of lung cancer or tuberculosis, but are common in patients with severe COPD, and the body mass index BMI of is of prognostic significance. Depression and anxiety are also common and contributing to morbidity. Two classical phenotypes have been described, pink puffer and blue blotter. The former are atypical, atypically thin and breathless, and maintain a normal partial CO2 until the late stage of disease. The later develop to tolerate hypercapnia earlier and may develop edema and secondary polycythemia. CBC इसका बढ़ना CBC RBC इसका बढ़ना सॉरी. Investigation: no reliable radiographic sign that correlate with the severity of airflow limitations. A chest X-ray is essential to identify alternating diagnoses such as cardiac failure and other complication of smoking, such as lung cancer and the presence of bullet. Emphysema, you can call it emphysema also. A blood count is useful to exclude anemia or document polycythemia, and in younger patients with predominantly basal emphysema, alpha-1 antitrypsin should be assayed. The diagnosis requires objective demonstration of airflow obstruction by spirometry and is established when the post bronchodilator force expiratory volume in 1 second FEV1 and force vital capacity FVC is less than 70%. The severity of COPD may be defined in relation to the post bronchodilator FEV1. If FEV1% more than equal to 80%, it indicate mild COPD. 50 to 79% it indicates moderate. 30 to 49% FEV1% it indicates to severe COPD, and less than 30% indicates very severe case of COPD. Measurement of lung volume provides an assessment of hyperinflation. The presence of emphysema is emphysema suggested by a low gas transfer during lung plethysmography. Exercise tests provide an objective assessment of exercise tolerance and provide a baseline on which to judge the response to bronchodilator therapy and rehabilitation program. They may also be valuable when assessing prognosis. Pulse oximetry may promote pulse oximetry may prompt referral for a domiciliary oxygen assessment if less than 93%. High resonance computed tomography is likely to play an increasing role in the assessment of COPD, and it allows the detection, characterization, and quantification of emphysema
and is more sensitive than the chest X-ray of detecting bully. It is also used to guide lung volume reduction therapy. ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट को जैसे लंग कैंसर है, तो वो जो ट्यूमर से अफेक्टेड पार्ट है, जो ट्यूमर वाला पार्ट है, उसको सर्जिकली रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका जो होता है ना, जैसे लंग वॉल्यूम रिडक्शन थेरेपी में आता है, जिससे जो बाकी बचा पार्ट है उसके ऊपर ट्यूमर की वजह से प्रेशर क्रिएट ना हो सके। ठीक है, वो जो एक अनवांटेड प्रेशर जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से लंग एक्सपेंशन के अंदर प्रॉब्लम आती है और पेशेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग नहीं कर पाता है, इसलिए उस पार्ट अफेक्टेड पार्ट को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह का जो प्रेजेंटेशन है कि पेशेंट को अगर बुलीज बने हुए हैं, तो इस तरह की जो है पेशेंट को सीटी करा के पेशेंट का इस तरह की फाइंडिंग्स को अगर हमें डायग्नोसिस करना है तो पेशेंट का चेस्ट सीटी कराना ज़रूरी होता है। I hope you all understood this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will try to resolve it soon. Thank you.